Hi guys, welcome back and welcome back again another video. Today we are going to be discussing the Q1 FY25 results of two companies, Ratnavir Precision Engineering Limited and Nitin Spinners. Okay, both have done really good in terms of numbers. So we will see the result update, how has the result been, and of course, what does it look like? Okay, so of course I know today everybody is engrossed and you all are busy, watching I think budget and seeing what lies ahead. But just my 2 cents with the entire budget thing is like, see, first of all, whatever happens, you and I have no control over it. And I think one thing is evident is you've seen that the tax rate or the tax slab that is there for LTCG and STCG has been increased, right? Ultimately, ab jo bhi bolo, it doesn't, I mean, I wouldn't say it doesn't matter, but what I'm trying to convey is, see, no matter how much they increase, ultimately you will have to pay that tax. You do whatever the noise you want to do, there is nothing you can do, right? So I find it really wasteful to be commenting on that, to be like talking about it on Twitter and everything and wasting our times, right? आप कितना ही लिखोगे, एक पोस्ट लिखोगे, दो पोस्ट लिखोगे, बट अल्टीमेटली जब अगला फाइनेंशियल ईयर आएगा और आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, you will have to do it. There is no go. So what is the point of talking about it? The second thing is like, do not generalize anything कि like, oh यहाँ पे इतना allocate हुआ and everything. Ultimately you will have to look at individual company का performance. Okay, let's say if there has been like some they have put a tax on something, increase the tax, decrease the tax on some import good or export good, let the management talk about it and you hear from the management's mouth. जो धंधा चला रहे उससे, so this is why I don't talk in Hindi, I get stuck in between. So whoever is running the business, आप उससे ही सुनो ना क्या हो रहा है, right? Ultimately, because see, whatever happens in an industry, there are times you see that irrespective if the industry is good, like let's say there has been good tailwinds or anything, there will always be one or two people that will not perform well. Similarly, at the end of the day, let's say there is everything going wrong for that industry, there will be one player who will just come out like a superstar, like a hero, and perform really well. So learn to track individual companies, look at individual companies and listen to the management and do everything. All of this is nothing but garam hawa, and do not waste your time, do not waste your attention. You can only do what is in your control. What is in your control is getting up every day in the morning, going to the gym, making sure you're taking care of yourself, working on your purpose, working on your side project, whatever it is that you are doing, spending time with your family. This is what is in your control, right? Abhi budget mein ye ho raha hai, wo ho raha hai, yahan pe import tax cut raha hai, wahan pe export, there is nothing you can do. As a retail investor, there's only little information you're going to have, and that is what you got to work with. Okay, so anyways, that's that. We'll start with the first company that we're going to be discussing is Nitin Spinners. Okay, so if you look, like the name tells, Nitin Spinners, you understand this is a company that is in the textile space. Okay, so ye kya karte hain? They manufacture this yarn, right? Yarn is what is used to make your clothes, different kind of clothes. Yarn ho gaya, and they also have this value added segment. तो क्या होता है इस yarn में और this cotton में, you add another extra 2-3 materials and make some knitted wear, right? If you are a gym goer, you would know this, that you have this ribbed material clothes. So these are some knitted wears, yeah, sweaters and everything. And of course they have this woolen fabric also. So basically they have one segment which is yarn, right? They make this yarn which is used in various industry. आपका yarn जो होता है, it is used in producing आपका apparels जो है, आपका कपड़े है, यान वहाँ पे यूज़ होता है. दी अदर प्लेस वेर यान इज यूज लाइक टी बैग्स बनाने में, मेडिकल आपका मेडिकल क्लोथ्स होता है ना, वेदर इट इज एप्रन एंड अदर थिंग्स, वहाँ पे यूज़ होता है, राइट? सो वन सेगमेंट इज यान. दी अदर सेगमेंट इज आपका वैल्यू एडेड सेगमेंट, जहाँ पे आप यान के साथ कोई और मटेरियल सच एज स्पैंडेक्स, कॉटन का जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉटन होता है, यू एड दिस एंड मेक इट इनटू अ वैल्यू एडेड मटेरियल. लेट्स से फॉर एग्जांपल आप यूनिफॉर्म के कपड़े आप देखते हो ना, वो एक मटेरियल जो होता है वो अलग होते हैं, थोड़ा थिक होता है, राइट? आपका बच्चे का, और व्हेन यू वर किड्स, आई थिंक इफ यू आर अ गर्ल, you wore that pinafore, right, when you were in a middle school, primary school. So you understand ना, the material, the thickness varies because you add some material and make it better. ठीक है, so let us understand कि like इसका revenue bifurcation क्या है. ठीक है, तो अगर आप देखते हो यान का जो segment है, that contributes, I have my notes over here, यान का segment that is there, it is contributing 69.5%. so the majority of the revenue right now is coming from yarn. ठीक है, और उनका value added segment जो है उसमें others are coming. ठीक है, so उसमें भी वैल्यू एडेड सेगमेंट में भी देयर आर टू टाइप्स. अगर आप बोलते हो फैब्रिक जो है, नॉर्मल फैब्रिक, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग अराउंड 24.6%. ठीक है, मतलब इनका टू और है, मतलब निटेड फैब्रिक और फिनिश्ड वोवन फैब्रिक, दैट इज व्हाट इट इज, एंड बोथ ऑफ देम आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग अराउंड 24 to 25. लाइक आई टोल्ड यू, निटेड जो होता है वो रिब्ड मटेरियल जैसा आपका स्पैंडेक्स मटेरियल एंड दोस, एंड वोवन फैब्रिक आपका यूनिफॉर्म में यूज होता है, ऑल दोस काइंड ऑफ मटेरियल. ठीक है, नाउ दिस इंडस्ट्री एक खास बात है कि लाइक एज आई टोल्ड यू, ये लोग यान बनाते हैं, राइट? एंड यान
में व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपका कॉटन का, सो योर रॉ मटेरियल इज कॉटन. बट अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैड हैपेंड इज द लास्ट 2 years was very very terrible for any textile industry you talk about it. Okay, so पहला हुआ तो यान का प्राइस आपका, सॉरी नॉट यान, आपका कॉटन का प्राइसेस एंड एवरीथिंग, वो रॉ मटेरियल का प्राइसेस, इट वाज फ्लक्चुएटिंग अ लॉट. सो इफ यू सी per kg it used to be I think 55,000. There was a point in last year and the previous year where per kg had gone up to like 1,10,000. So you can understand how the steep increase in raw material का price. So that was one issue. The second issue was demand, because we were coming out of COVID. क्या हुआ था, pent up demand था, and after that for the next 2 years there was absolutely no demand. There was a lack of demand in throughout the industry. So now what has happened, आप दोनों की चीज, like first of all demand नहीं है आपके इंडस्ट्री में, and second of all आपका कॉटन का प्राइसेस भी बढ़ रहा है यहाँ से. So both of this really struck all the companies that is there in the textile industry. ठीक है, and on top of that you understand right कि like जो भी यहाँ पे है बांग्लादेश में है, you're getting it done for cheaper, so there is another factor of that. But now the things are coming back to normal. You will see that the cotton prices have come back. You will see that the demand is also reviving. आप देख सकते हो there has been a very steady state of demand that we see in this sector. ठीक है, so combining these two factors you see that right now for the first time actually in 2024 में, because earlier उनका sales था, but like I told you because of these two आपका expenses ज़्यादा हो रहे हैं, you were not getting a good amount of operating leverage. आपका PAT जो था it used to be flat only, but for the first time I think they started the year on a very good note. You will see that Q1 FY25 में you're seeing a good amount of operating leverage also. So उनका sales जो है on a year on year basis like last Q1 से इस Q1 में you see that the sales has improved by 30%, increased by 30%. ठीक है, और उनका PAT जो है, PAT has grown by 45%. So very good on this matter. राइट अगर उनको वॉल्यूम ग्रोथ के बारे में बात करती हूँ, सिमिलरली पैट मार्जिन भी जो है 4.6 से 5.2% पे इंक्रीज हुआ है. इफ़ यू लुक एट देयर वॉल्यूम्स राइट, उनका यान का जो मैंने बोला, यान का वॉल्यूम हैज़ इंक्रीज बाय 50% लास्ट Q1 से इस Q1 में. इफ़ यू सी द प्रोडक्शन दैट हैज़ बीन डन फॉर यान इन देयर फैक्ट्रीज, यू विल सी दैट इन टर्म्स ऑफ मीटर्स या मेट्रिक टन्स यू विल सी 51% का इंक्रीज हुआ है. सिमिलरली उनका निटेड फैब्रिक जो है, जैसे मैंने बोला उनका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में 2 है, एक है निटेड फैब्रिक और एक है वोवन fabric. Knitted fabric has increased by 70%. Now one of the reason for knitted fabric to increase is इनका base very छोटा है. Like I told you revenue bifurcation में हमने देखा कि like 69% आ रहे यहाँ से और 25% आ रहे इस value added में, और value added में 2 चीज़ें हैं, एक है knitted fabric और एक है woven fabric. ठीक है, so knitted fabric में it has increased by 70%, of course small base है, and woven fabric it is more or less flat, it is down by 4.5%. Okay, so that overall you can tell very good set of numbers. ठीक है, अभी इसके बारे में वी विल हैव टू सी कि लाइक गाइडेंस क्या होता है, व्हाट इज द आउटलुक लाइक. फॉर दैट वी विल हैव टू सिट एंड वेट फॉर द कॉन कॉल, विल हैव टू लिसन एंड रीड द कॉन कॉल फॉर दैट, बिकॉज अभी तक दे हैवंट लाइक स्पोकन एनीथिंग अबाउट द गाइडेंस. बट वन थिंग इज मैनेजमेंट कॉमेंट्री जो है उनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में एक मैनेजमेंट का एक मैसेज था, वेयर दे टेलिंग कि लाइक डिमांड इज लुकिंग वेरी स्टडी एंड देर इन्वेस्टिंग मोर ऑन द ग्रोथ एंड देर फोकसिंग मोर ऑन द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, बिकॉज ऑफकोर्स आपका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में आपका मार्जिन ज़्यादा है. सो जो भी उतार चढ़ाव हो सकते हैं रॉ मटेरियल का प्राइसेस में, यू डू नॉट फेस दैट मच ऑफ एन इम्पैक्ट. ओके, दैट इज वन थिंग. So that's that with Nitin Spinners. हाँ, एक और बात है, उनका लाइक केपेक्स भी उन्होंने ढंग का किया है, लाइक दे हैव पुट अप अ लॉट ऑफ स्पिंडलर्स एंड उनका जो वीविंग मशीन्स एंड एवरीथिंग इन द लास्ट 2024 दे हैव डन अ लॉट ऑफ केपेक्स एंड यू आर ऑल्सो सीइंग दैट का यूटिलाइजेशन इफेक्ट कमिंग फोर्थ इन दिस ईयर टू एज वेल एज इन Q1 FY25. ठीक है, सो दैट इज दैट अबाउट इसका नितिन स्पिनर्स का. एक और चीज़, या दैट इज दैट अबाउट नितिन स्पिनर्स. वी विल हैव टू वेट फॉर द मैनेजमेंट टू सी कि लाइक क्या बोलते हैं गाइडेंस में, what is it going to look like the entire year. ठीक है, and I think from there we can deduce कि like valuation and everything, but for now this is what it is. ठीक है, the next company we are going to be talking about is Ratnavir Precision Engineering Limited. Now this is a quite fascinating company. Before I continue, let me tell you this company doesn't do any kind of investor presentation या con call. So whatever the details I have, it is from the DRHP of the company. ठीक है, so DRHP and annual report last year का है. So whatever the business model I could understand is from that. ठीक है, so first let us start with what does the company do. Like let us understand the business model. ठीक है, The company manufactures stainless steel product. Now you all know what is steel. आपका एक रॉ मटेरियल, एक कमोडिटी होता है, आप उसमें स्टील पाइप बनाते हो, स्टील का ट्यूब बनाते हो एंड एवरीथिंग. ठीक है, ये स्टेनलेस स्टील क्या होता है, व्हेन यू टेक द नॉर्मल स्टील का पाइप या ट्यूब वट एवर यू मेक आउट ऑफ दैट स्टील, यहाँ पे क्या होता है, कोरोजन लेवल इज वेरी वेरी हाई. राइट, सो व्हेन यू पुट इट अप इन द नॉर्मल एनवायरमेंट क्या होता है, उसका कोरोजन लेवल हाई होता है. ठीक है, सो वॉट यू डू, यू एड अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स टू इट एंड यू मेक इट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द एनवायरमेंट, यू मेक इट
into, like you add some materials and make it into stainless steel, ठीक है. Now when you talk about the stainless, I think you add chromium over here to make it a stainless steel. I could be quite wrong, but anyways, you get the point, right? So you make it into a high value product. Now when you're talking about stainless steel over here, यहाँ पे भी stainless steel में they're not selling stainless steel just like that. They're making value added products out of the stainless steel. So what are the products they do? They do stainless steel का sheet, stainless steel का washer, stainless steel का क्या है, solar roofing hooks, and stainless steel का pipe and tube, ठीक है. Now you might ask me, what is this washer and sheet? To be very honest, I'm leading this company for the first time. Actually, I'm tracking it in this quarter only. So I also didn't know what this washer and sheets were, but I just went and Googled. But see, these are the things actually I think, you know, we are way more accustomed to talk in our native language that is there. So you do not know these terms in English. I would suggest you all कि like just आप एक बार इन नामों को stainless steel washer, stainless steel sheet और solar roofing hooks जो है आप एक बार Google कर लेना. Once you see the picture, once you see the picture, I'm pretty sure you understand what this material is or what this product is, because all of these products we have seen in our day-to-day life. We are, you know, but you wouldn't know the name probably in English, but I can vouch and I can guarantee you have seen these materials or these products every day in your day-to-day life. Just to give you, I'll just spend a few more minutes talking about the business model. अगर आप उनका stainless steel sheet, you would have seen आपका ये this is used in house. एक rectangle color होता है, you will buy it in terms of meters, and some stainless steel का sheet will have this reflective surface and some will not, right? Like I told you, just Google it, you will understand what it is. You would have seen it. Washer जो होता है आपका, you would have seen this nut and bolt ना. Nut and bolt में एक circle जैसा एक part होता है which will hold that nut and bolt together. So that is called your washer. Again, Google it. You will just seeing the product आपको समझ में आएगा. और एक और चीज़ है सोलर रूफिंग हुक. ओके, सोलर रूफिंग हुक का मतलब है, लेट्स से आपको सोलर पैनल होते हैं ना, आपको उसको लाइक यू नो जस्ट टू मेक इट स्टेशनरी, जस्ट टू प्लेस इट इन अ पर्टिकुलर सेटअप, यू यूज अ ब्रैकेट यू नो टू फिक्स इट. दैट इज कॉल्ड एज योर सोलर रूफिंग हुक, ठीक है. सो दीज आर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट दे मेक, ठीक है. नाउ आई विल गिव यू लाइक इसका भी रेवेन्यू बाइफिकेशन कहाँ से कितना आता है, ठीक है. अगर उनका स्टेनलेस स्टील शीट देखते हो, दिस इज वन ऑफ द मेजॉरिटी से रेवेन्यू आता है यहाँ से. 63% of the revenue comes from stainless steel sheet, okay, and then 17.5% comes from washers, and solar roofing hooks जो है comes 2.1%, and pipes and tubes जो stainless steel का pipe और tube होता है वहाँ से आता है 6.2%. Now of course because Q1 FY25 में like I told you they have just given the result document, this product portfolio थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, you know, little bit percentage points, you know, it could change, but yeah. If you're hearing a background noise, please ignore. Anyways, so other than that, if you see, उनका majority again, like I told you, revenues जो है, it is coming from domestic, ठीक है. So 80 to 85% of the revenue is coming from domestic, and the rest 15 to 20% is coming from export, ठीक है. Now, if you see, this company that is there is a very local Gujarati company. So they have all their manufacturing plant and everything is in Gujarat. Now I'll tell you, this is the most interesting part in the business, ठीक है. इसको आप ध्यान से सुना because this is very important. This is guy actually that's going around talking paper, so I don't know if you're able to hear it in the background, but just ignore it. Anyways, okay, just talking right now about the capex that they have. So यहाँ पे इनका सारा का सारा प्लांट जो है इट इज इन गुजरात. ओके, दे हैव 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इन गुजरात. ओके, नाउ दे हैव 2 इन दैट, यूनिट 1 एंड यूनिट 2 दैट इज दे हैव 4 यूनिट्स लाइक आई टोल्ड यू. यूनिट 1 एंड यूनिट 2 में सारा का सारा प्रोडक्शन होता है. यूनिट 1 में उनका स्टेनलेस स्टील का शीट और वॉशर होता है, एंड यूनिट 2 में वही सोलर का जो मैंने बोला सोलर रूफिंग हुक्स होता है, एंड यू नो द स्टेनलेस स्टील का पाइप्स एंड ट्यूब्स. सॉरी आई एम रॉन्ग ओवर हियर. यूनिट 1 में उनका यूनिट 1 में शीट्स एंड वॉशर होता है, ठीक है. लेट मी जस्ट गेट इट राइट. या यूनिट 1 में स्टील्स शीट्स वॉशर एंड सोलर माउंटिंग हुक्स होता है. यूनिट 2 में स्टेनलेस स्टील का पाइप्स एंड ट्यूब्स होते हैं. सो ऑल ऑफ द products that are there are manufactured in unit 1 and unit 2. okay, now see all of these products when you make, आपका थोड़ा तो waste material आएगा ना, because you're creating a value added product over here. आपका भी थोड़ा तो wastage होगा. What they do is they collect all this wastage and they get it into unit 3. unit 3 में क्या, so unit 3 and unit 4 are backward integration for them. okay, so this is the most important part over here. So unit 3 में ये सारा waste material जो आता है यहाँ पे आता है, ठीक है, जो भी unit 1 और unit 2 से
जो को भी वेस्ट मटेरियल आता है, इट कम्स टू यूनिट 3. यूनिट 3 में सब कुछ मेल्ट होता है, ठीक है, एंड वो जाते हैं यूनिट 4 में इंगॉट्स बनाने के लिए. इंगॉट्स का मतलब है वो गोल्ड बार या स्टील बार आप देखते हो ना, वो यू आई थिंक व्हेन आई टेल गोल्ड बार आपका माइंड में वो पिक्चर आता है वो गोल्ड बार का. सो इंगॉट्स और दोज बार्स, सो दे मेक दिस स्टेनलेस स्टील का बार. सो यूनिट 3 में क्या होता है, दे गेट ऑल दिस वेस्टेज मटेरियल नॉट ओनली फ्रॉम देयर ओन प्लांट बट ऑल्सो लाइक यू नो द स्क्रैप मटेरियल्स दे कलेक्ट फ्रॉम अदर पीपल, कम्स हियर एंड देन यूनिट 4 में आता है. एंड देन अगेन दिस स्टेनलेस स्टील जो होता है, वॉट एवर द वेस्ट प्रोडक्ट इज इट, दे मेक इंगॉट्स आउट ऑफ इट एंड अगेन इट गोज बैक टू यूनिट 1 एंड यूनिट 2 टू प्रोड्यूस वही शीट्स, वॉशर, आपका सोलर रूफिंग हुक्स एंड एवरीथिंग. सो दिस बैकवर्ड इंटीग्रेशन इज वन thing that is really helping them in creating higher margins, because if you look, this company has a margins of EBITDA margins of 10% and around 9 to 10% it has now, and it is quite a big thing because ये B2B business है. on top of B2B business ये commodity business है, stainless steel का products बनाते हैं, right? and of course जब आप stainless steel का कुछ कर रहे हो, your entire business depends on the raw material price of steel ultimately. So the fact that you have this 10% का margin, आपका EBITDA margin on a very small base, because it's a very छोटा company, 800 करोड़ का 900 करोड़ का कंपनी है. सो दिस इज अ ह्यूज थिंग, दे आर एबल टू डू दिस लाइक आई टोल्ड यू इज बिकॉज ऑफ दिस बैकवर्ड इंटीग्रेशन. सो दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर टू कवर, ठीक है. नाउ अदर देन दिस इफ यू लुक, उनका केपेक्स अगर आप देखते हो, सो द कंपनी का प्लान था कि लाइक उनको और एक यूनिट बनाना है. तो ऑलरेडी 4 यूनिट है, दे वांटेड टू गेट अनदर यूनिट 5 जो यूनिट 1 का पास ही है, ओके, एंड दे आर गेटिंग इट ऑन अ लीज, एक 99 ईयर का लीज है एंड दे वांट टू एंटर इनटू अ न्यू प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कॉल्ड दिस सर्क्लिप्स, ठीक है. सो दिस वाज इट. नाउ वी डू नॉट नो इफ दे हैव स्टार्टेड दिस और नॉट, लाइक आई टोल्ड यू कुछ अपडेट्स नहीं आते, सिर्फ रिजल्ट डॉक्यूमेंट आता है, ठीक है. नाउ अगेन लाइक आई टोल्ड यू द नंबर्स आर जस्ट ऑफ द रूफ, they're very good numbers. अगर आप देखते हो सेल्स जो है, सेल्स has increased by 70% on a year-on-year basis and on a quarter-on-quarter basis it has increased by 43%. अगर आप उनका पैट देखते हो, पैट has also increased by 62.5% on a year-on-year basis और on a QOQ basis it has more than doubled. I think 1.3x हुआ है on a QOQ basis, ठीक है. And you can see there is a good amount of operating leverage also which is visible QOQ में. But again having said that, छोटा सा कंपनी probably year-on-year में operating leverage नहीं मिला, but having said that, growing your profits at 62% is also no joke, right? Again PAT margins भी improve हुआ है 6.3 से 6.7% तक. Now I just want to conclude this by telling, इसका अगर कंपनी का देखते हो, like I told you, इनका कोई इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन नहीं है, कोई भी कॉन कॉल नहीं है. That also doesn't mean that the company is bad अगर कुछ इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और कॉन कॉल नहीं कर रहा है. The only problem comes here is there is lack of clarity, right? Like I told you, see, first of all we do not know कि like seasonality है या कि नहीं business, because I was checking the last 3 years का data. There was one time कि like Q2 में थोड़ा सा डिप हुआ था सेल्स में एंड लास्ट ईयर में Q3 में थोड़ा सा डिप हुआ सेल्स में. सो डू नॉट नो द सीजनैलिटी कम्स इन Q2 और Q3 बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज इन Q2. हु नोज, लास्ट ईयर यू नो दे सॉ लॉट ऑफ प्री ऑर्डर्स इन Q2 एंड नॉट इन Q3. दैट इज नंबर 1. द सेकंड थिंग इज द प्रॉब्लम विद दिस काइंड, लाइक आई टोल्ड यू, रॉ मटेरियल का स्टील इज अ ह्यूज is the only drawback over here because it completely depends, your margins depends on that. The third problem is, like I told you, since they don't do a investor PPT or con call, what happens is over here you do not know what to expect for the next quarter. Like let's say अगर next quarter में result बुरा आता है, you do not know if it is like a one-off thing or seasonality है, what it is. I think this is one of the main challenges with businesses like Ratnavir Precision Engineering Limited. Very good business, very great set of numbers, but the lack of clarity actually like what to expect in the coming quarters becomes a hindrance over here, ठीक है. But whatever I know, I have shared over here. The last thing I will touch up is on the valuation, okay. Now I'm assuming conservatively, very conservatively I'm assuming, although the PAT has grown this year by 62% on a year-on-year basis, I'm still assuming कि like PAT जो है इस पूरे साल में, that is FY24 का versus FY25 में सिर्फ 20 to 25% पे increase होगा. So if you're taking 20 to 25% of increase, I think your PAT का range comes between 38 to 45 crores over the base of FY24, and you divide it by the market cap of the company, because market cap of the company is around 864 crores, 900 crores. Your PE का range comes between 19 to 23. So I would say you are getting a 60%, a really good 60%, 70% का growth engine as of Q1 FY25. There is a good amount of operating, good amount of PAT, very good amount of PAT. You're also seeing, your margins are really great. PE is quite reasonable, and market cap is also chota. So overall, it clears my investment checklist, I would say. But again, I'll just tell you things like, I think a lot of you will ask like, what do I do in such kind of situation? So first of all, there are
are few companies in my portfolio where the company doesn't do investor PPT or con call, and you'll have to take decision on that company based on the result document itself. So I do that, right? I invest in such companies, but my thing is like I am not able to do. I will not have the confidence to go and do like 10% allocation, because in my portfolio, if you see, I have like 10 to like I do a minimum of 8 to 10% allocation most of the times. There is one stock, my highest allocation is of 15%, right? So I have these stocks, but when you come with these kind of business opportunity where numbers are great but PPT और कॉन कॉल नहीं है, मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है 10% एलोकेशन करने का. सो बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ द गेम. मुझे देखना है कि लाइक क्या हो रहा है इसमें. लाइक अगर लेट्स से क्वार्टर ऑन क्वार्टर में अच्छा करता ही रहा, लाइक अगेन इट्स अ बोनस फॉर एन इन्वेस्टर, राइट? सो व्हाट आई डू इज आई गो विथ लाइक अ minimal allocation according to my risk profile, right? Two things also matters to me over here. One is not just the numbers and the result, but my understanding on the business model, right? So I would have to, like, at least if I don't know what these PPT or con call mein nahi aa raha hai, I just need to have a very very good clarity on the business model. So what I do is, once I get the clarity on the business model and everything, I do go and invest probably a 4 to 5% maximum allocation. I just can't. मेरा तो like फट के आ जाता है if I do more than that, ठीक है? Because let me be frank, it's my hard earned money, right? So it literally like my heart is, the thing is, see, whenever I do an investment now, I need to be at peace ultimately. That is the most important thing for me. If I do 8% 10% ऐसे companies, I'm not talking about Ratnavir Precision Engineering, but kind of companies like this where you do not have clarity, what happens is I will be just dying in anxiety over here, just to be very honest, right? Because other companies में क्या होते हैं, volatility होता है, like for example June 4th में क्या हुआ, I wouldn't care. मुझे like bonkers, like I would फर्क ही नहीं पड़ता, because I read the con call, I know what to expect, I know what to, I know what I'm holding. But here you do not know कि like एक stock जो भी है गिर रहा है, is it because of volatility या कुछ news है which as a retail investor you do not have knowledge to. So that is the thing. But again, like I told you here, ultimately, as retail investors, we need to ball with what we have. Sometimes you have a lot of information, sometimes you don't have information. So we have to choose, like, what is our risk profile and how much we can allocate as, according to that. And then you'll have to keep changing your allocation. Either you cut the allocation, increase the allocation, or exit completely from that business based on the agle quarter ka result, and how it goes. Because ultimately, you and I do not decide the holding period of a stock. Understand this. मैं डिसाइड नहीं करती हूँ, आप डिसाइड नहीं करते हो. द एंटायर होल्डिंग पीरियड ऑफ द स्टॉक कब तक आप होल्ड करोगे, दैट इज अल्टीमेटली डिसाइडेड बाय बिजनेस परफॉर्मेंस. लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एक रत्नवीर प्रिसिशन इंजीनियरिंग का ही मैं एक एग्जांपल देती हूँ. लेट्स से यू आर इन्वेस्टेड ओवर हियर, ठीक है, एंड ये करता गया, अच्छा करता गया, एज लॉन्ग एज द वैल्यूएशन इज फेवरेबल, यू कीप इंक्रीजिंग ओवर दैट द एलोकेशन, राइट? बट द मिनट like business performance goes, you will have to take a decision whether you have to cut the stock or exit from that stock. That is it. There is nothing you can do other than this, right? That is ultimately, like, you can't tell like, oh, I'm buying this stock and I'll hold this for 10 years. Like, मेरा बाप का business नहीं है, आपका बाप का business नहीं है, तो how can you tell आप 10 साल तक hold करोगे एक stock को? That is not right. So you will, the only thing that is there with such kind of businesses, like, just to wrap it up, is no matter what, no matter the investor PPT or con call, you will have to just taper with your allocation and play. And the other thing is, you have to watch over the result, watch over the company updates like a hawk, right? Like I told you, there is no information, so you have to like probably go to the BSE website every day and keep checking, go to the announcement and check like कोई update आया है, right? Like I told you, numbers सब अच्छा है, but you do not know कि like I told you ना, उसका एक Circlip का product आया है. This was written in DRHP. We do not know if this has been started. It has been started in the product line. Maybe इसके वजह से only उनका top line जो है 70% से बढ़ा. Maybe that is the reason. You do not know. You do not know order book क्या है. Like what is the order book like as of today? There is no information, right? So this is the only problem. But like I told you, you're a retail investor, I'm a retail investor. We just have to roll with what we have, right? So these are the two companies, both companies, very good set of numbers, very excellent set of numbers. We will have to just track the con call and see if the guidance also remains very strong and if there is no headwinds in these industries. And the other thing is, we'll have to track again after that in Q2 and see that the earning momentum of these businesses sustains, right? And that's all for today. I'll see you tomorrow. Bye.